नहीं नहीं, इतनी तो चाहिए। Professor Angeline Cheng is there? बुलाओ कोटेशन। Good morning, Professor Angeline. Yes, ma'am, she's there. She's there. I'm here. I wasn't able to unmute or do my video until now. Somehow it was locked. Now you can. So now I can. How is everybody? Hello, ma'am. How are you? Good. How are you? Wonderful to see you. Yeah, we are absolutely fine. Excellent. But just we are about to start the webinar. Fantastic. Professor Sanjay Lodha has joined. नो, एक तो मुझे ये चाहिए, एक। Good morning, I'm here. How are you? Good morning, sir. ठीक है। Yeah. Good morning, sir. A very good morning. Good morning to all. Hello, Angelina. How are you? Good. How are you, Sanjay? एंजलिन मैम का फिर वो लेटर वो लिखा हुआ। बिल्कुल। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार बंधु, नमस्कार। We'll begin in the next 2 minutes. Yeah. बस। Hello, Dr. Chang. Sure. Hello. Hello, sir. ठीक है। Hello, sir. Good morning. Good morning, everyone. The Indians have disturbed you, Angelina. Otherwise, you would have been sleeping. Oh, this is so worth being up for. It's my great pleasure, my great honor. It's a joy. It's a real joy. Nice talk. Yes. It's really kind of you to be up so late in the night. Oh, it's great to see you, Charu. I think I met your sister last time, but really didn't get a chance to see you. But I've heard so many wonderful things about you. So congratulations to your whole family. Thank you. Dr. Gehlot, are we up to begin now? Sure. करें स्टार्ट करें? जी सर। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इम्तिहान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। डिजिटल मंच के सभी साथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर दिनेश गहलोत और मेरी पूरी टीम आप सबका यहाँ स्वागत कर रही है। कोरोना के इस संकट में, कोरोना महामारी से कैसे मुकाबला किया जाए, इस संदर्भ में नागरिक समाज और प्रशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर विचार करने, नागरिक समाज की विशेष भूमिका और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे नए नवाचारों पर विचार करने हेतु हम लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर एंजेलिन चैंग, आप प्रोफेसर हैं क्लीवलैंड मार्शल कॉलेज ऑफ लॉ, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में, और साथ ही साथ आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की RC 18 की आप चेयरपर्सन भी है। मुख्य अतिथि हमसे जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमारे इस वेबिनार में हमारे दो मुख्य वक्ता है, दोनों हमारे राजस्थान की धरती से हैं और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर राजस्थान का मरुभूमि का नाम रोशन किया है। आप हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर अशोक शर्मा जी, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी
राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने लोक प्रशासन विभाग में लंबे समय तक सेवाएं दी है। हमारे साथ हमारे परिवार की मुखिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी सर स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक जब शुरुआत करनी है तो मैं निवेदन करूंगा हमारी टेक्निकल टीम के सतीश जी से कि हमारे विश्वविद्यालय के कुल गीत को प्रारंभ कर इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की औपचारिक शुरुआत करें। श्री सतीश जी। सतीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शक्ति सर्वत्र पूजिता मीना बरड़िया। अज्ञाननाशी शक्ति सर्वत्र ओके मैम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भी सब जुड़ गए। अज्ञाननाशी शक्ति सर्वत्र पूजिता अज्ञाननाशी शक्ति सर्वत्र पूजिता विद्या ज्ञान ज्योति प्रकाश विद्या मंदिर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है मेरा महान विद्या मंदिर मेरा महान विद्या मंदिर मेरा महान सूर्य नगर का गौरव विद्या मंदिर मेरा महान विद्या मंदिर मेरा महान विद्या मंदिर मेरा महान क्या हुआ? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? जस्ट अभी ऑन करना। Just wait for a minute. There is Okay. some fault. Dr. Meena Bardia, should we continue with the program? I think there's some technical glitch. Okay, all right. सतीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब आप इसको रोक दीजिए यहीं पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम है और चूंकि बहुत सारी तकनीकी जटिलताएं होती हैं उस वजह से शायद ये प्रॉपर हैंडल नहीं हो पाया होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सतीश जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस वेबिनार की कन्वीनर प्रोफेसर मीना बरड़िया मैम को। प्रोफेसर मीना बरड़िया मैम ही वह मेंटल मैप है इस पूरे वेबिनार की, जिन्होंने उनके मस्तिष्क में ये पूरा कॉन्सेप्ट आया था और उन्होंने कोरोना संकट में, कोरोना की इस महामारी में
हमारे सिविल सोसाइटी की और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी चुनौतियों का सामना करने में ये किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकते हैं, इस संदर्भ में आप ही के मस्तिष्क की ये उपज है प्रोफेसर मीना बरड़िया मैम। आप हमारे विश्वविद्यालय के गांधी स्टडी सेंटर में डायरेक्टर रही है। वर्तमान समय में आप प्रज्ञा निकेतन, जो कि हमारे ब्लाइंड विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल है, उनकी पिछले 6 वर्षों से आप वार्डन है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की RC 18 की 2012 से सदस्य हैं। आपने इसमें उपाध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। आप कई सामाजिक सेवाओं और बच्चों से संबंधित NGO से जुड़ी हुई है। जुलाई 2021 में IPSA का जो कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है उसमें भी आप पत्रवाचन करने जा रही है। तो मैं प्रोफेसर मीना बरड़िया मैम से निवेदन करूंगा कि वह अपना उद्बोधन दें, जिसके अंतर्गत हमारे जो अतिथि हैं उन अतिथियों का स्वागत भी करें। हमारे डिजिटल मंच से जो हजारों हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए भी औपचारिक उद्बोधन दें। साथ ही साथ ये जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है इसकी थीम पर प्रकाश डालें प्रोफेसर मीना बरड़िया। Thank you, Dinesh. Om Saraswati Namaha. Om Saraswati Namaha. Om Saraswati Namaha. माँ सरस्वती को मेरा नमन, नमस्कार. A very good morning to one and all who have joined this virtual platform, and a warm welcome in this international webinar on behalf of Department of Public Administration and Narain Vyas University, Jodhpur, on the subject Coping up with COVID-19 pandemic, challenges before administration and civil society. I feel proud and privileged to have with us all the esteemed guests, and it's my pleasure to extend a cheerful welcome on this auspicious Dr. Meena Bardia, we can't hear you. You're not audible. मीना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Dinesh ji, there's some internet issue, so she's joining back. वो वापस join कर रहे हैं. ओके ओके, तो हमें 1-2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए शायद रुकना पड़ेगा जब तक वो आ नहीं जाती है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि इस वेबिनार की एक बड़ी खासियत है कि इस वेबिनार में 1000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का ये जो संकट है, इस संकट की वजह से मानव सभ्यता पर जो संकट आया है, उस मानव सभ्यता के इस संकट में प्रशासन की बड़ी अहम भूमिका है।
सिविल सोसाइटी ने पिछले 15 महीने से जो अपनी भूमिका निभाई है, प्रशासन की जिस तरह से लिमिटेशंस, जिस तरह की सीमाएं हमको दिखाई दे रही है, राज्य की जिस तरह की सीमाएं हमको दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में नागरिक समाज ने जो भूमिका निभाई है वो अपने आप में अभिनंदन योग्य है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार आह्वान कर रहे हैं लोगों से, जनता से, भामाशाह से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, नागरिक समाज से कि वह आगे आए और कोरोना के इस संकट में, मानव सभ्यता के इस संकट से बाहर निकलने में सरकार की मदद करें। हम सब लोग रोल बैक ऑफ द स्टेट से परिचित है, राज्य पहुंच गमन की नीति से परिचित है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत जैसे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में सरकार निरंतर काम कर रही है ताकि हम सब लोग इस संकट से बाहर आ सके, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की बहुत सारी सीमाएं हैं और पीपल पार्टिसिपेशन, जनता की सहभागिता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। चूंकि प्रोफेसर अशोक शर्मा जी हमारे बीच में है तो वे लोक प्रशासन के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, इस बात को रखेंगे हमारे सामने कि किस तरह से नागरिक समाज कोरोना के इस महामारी का मुकाबला करने में सहायक हो सकता है, मददगार हो सकता है। हम लोगों ने देखा है पिछले 15 महीने में जिस तरह से रक्त की कमी पर, प्लाज्मा की कमी पर, ऑक्सीजन के अभाव में जब लोगों का जीवन संकट में पड़ा तो नागरिक समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेलो, हाँ मीना मैम, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू। sorry for the technical. इट्स ओके मैम, इट्स ओके मैम। I feel proud and privileged to have with us all the esteemed guests, and it's my pleasure to extend a cheerful welcome on this auspicious occasion of Buddha Purnima. I welcome Professor Angeline Cheng, and she is Professor of Law at Cleveland University, USA, and Chairperson of the Committee on Asian and Pacific Studies of International Political Science Association, Montreal, Canada. It is her wholehearted support and encouragement that came out in the form of this webinar. She is a multi-talented personality handling two different streams with equal balance and experience. She has great knowledge of law and a great piano player also. She is a musician of repute and excellence with winning of the highest international music award, the Grammy Award, and many other more awards. Ma'am, you have given your valuable time for this webinar. We are thankful for your cooperation, and I expect the same for the future endeavors also. I am delighted to welcome one of the keynote speakers, Professor Sanjay Lodha, a well-known intellectual personality and professor of repute in political science. He has been very much appreciated for his valued fellowships and projects with number of different national and international institutions, great teaching and guidance to number of research scholars. Sir, we are deeply honored to welcome you. I would like to welcome one more keynote speaker, an expert of public administration, a keen researcher, strong administrator, and a creative and positive thinker, Professor Ashok Sharma, sir. He has long teaching career and many feathers in his cap with so many awards, academic positions, memberships, and nominations. We thank you for your valuable suggestions and kind support in organizing this webinar. I extend an unpretentious welcome to you, sir. I express a soulful welcome and deep sense of gratitude to our patron, head of the university family, Honorable Vice Chancellor, Professor P.C. Trivedi, sir. He is the heart and soul of this webinar. As soon as I mentioned about this webinar, he gave his consent immediately. Sir, your academic pursuits, positive attitude,
and sensitivity towards important issues have always contributed for the progress of all the institutions which you were leading. You have always guided and inspired us to move towards higher goals. I am thankful to Professor J.S. Shekhawat sir, Head Department of Public Administration, for permitting me to organize this event. I extend a warm-hearted welcome to all the respected deans of Faculty of Arts, Education and Social Sciences, Commerce, Law, and directors, professors, and my seniors, especially Professor Kanta Kataria, Head Department of Political Science, with whom I have been working since start of the career. This is for the first time that so many participants have registered for such an event. I welcome all the dignified participants from different states of India and from different parts of the world. I'm delighted to share about the overwhelming response of the participants with more than 1,000 registrations. I welcome you all, history makers, on behalf of Public Administration Department. Now, my student and colleague, Dr. Dinesh Gehlot, compiler of the program, is assistant professor in political science, is very energetic, blessed, and amazing teacher, popular in students. He is teaching in the Department of Political Science 2006 and as a faculty member since 2013. I appreciate his dedication and collaborative as coordinator. I feel proud to admit that Dr. Charu Bhurat, Assistant Professor of Economics, the co-coordinator of this webinar, has given valuable suggestions and executed them perfectly. She was invited by University of London to deliver lecture in 2018. She is committed, charming and popular faculty member in NMIMS University, Mumbai since 2012. I'm lucky to have such a devoted, strong team and two strong pillars of support to conduct and organize this webinar. Friends, as we all know, the COVID-19 crisis has affected societies, politics, and economies around the globe and will permanently reshape our world as it continues to unfold new complications. While the fallout from the crisis is both amplifying familiar risks and creating new ones, change at this scale also creates new openings for managing systemic challenges and ways to build back better. We have to look ahead and across a broad range of issues related to administration of trade, governance, health, labor, traveling, tourism, and above all, financial issues. It offers decision makers comprehensive picture of expected long-term changes and inspiration to leverage the opportunities this crisis offers to improve the state of the world. World Economic Forum in its report of 2021 has described it as fractured future. The COVID-19 pandemic quickly spread worldwide, radically changing each and every life, both in its content and processes. From a national point of view, different ways to address and manage the health crisis were developed with consequences for institutions functioning, political relations among national and subnational layers of government, governing and non-governing political parties, stakeholders, and NGOs, national leaders and governments. They reacted differently to the generalized health issues.
implementing different policies as well as diverse crisis management strategies. From an international point of view, the crisis also changed the patterns of long standing relationships, opening the way to new forms of interaction. The role of civil society becomes very important with side by side with the administration and supporting the administration. Civil society is the wide array of non-governmental and not-for-profit organizations that have a presence in public life, express the interests and values of their members and others based on ethical, cultural, political, scientific, or religious considerations. It is an essential partner of administration in the global ecosystem and democratic states and a core part of the international coronavirus recovery. It acts as democratic watchdog, communication with common people, and building trust among them. Without the cooperation and coordination with civil society, it would be difficult to achieve the public welfare goals, especially in COVID times. After second wave, third and fourth wave of COVID is also forecasted by experts. The government, administration, civil society, and each one of us will have to work harder with new strategies, techniques for better future of humanity. I once again pay my respects to you all and would like to share some beautiful lines. Success is failure turned inside out. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. And you can never tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are hardest hit. Stick to the fight when you are hardest hit. It's when things go wrong that you mustn't quit. Thanks a lot. Jai Hind. Thank you, Professor Meena Bardia. Greetings to each one of you present here. I feel extremely honored to introduce our chief guest for today, Dr. Angeline Chang. She is chair of the Research Committee on Asian and Pacific Studies of the International Political Science Association, IPSA RC 18. She is also the editor of the Routledge Handbook of Asia in World Politics and professor of law at the Cleveland Marshall College of Law, Cleveland State University, USA. On behalf of Narain Vyas University, Jodhpur, I welcome Dr. Chang today to this webinar. She is recognized by Johns Hopkins University in the Women of Hopkins honoring female trailblazers. Additionally, she is the first pianist of Asian descent and the first American female pianist to win a Grammy Award. How amusing is that, ma'am? She furthers future generations of political science by the international. She furthers future generations of political scientists by the International Association for Political Science Students (IAPSS) in politics and governance, and youth and civic engagement for IAPSS Asia through United Nations UN 75 consultations. We are very grateful, Dr. Chang, for accepting our invitation and marking her presence here. Despite the extreme time difference, where it's 1:30 a.m. in the night almost in Cleveland, she's been kind enough to agree to be a part of this webinar. It means a lot to us, ma'am. I now invite her to enlighten the audience with her words before we proceed with the event. Over to you, Chang. Thank you so much, Professor Charubrat.
It is a great honor and it gives me great pleasure to join you today at the international webinar on coping with the COVID-19 pandemic, challenges before the administration and civil society, organized under the auspices of the Department of Public Administration at Narain Vyas University in Jodhpur, Rajasthan, India, and the International Political Science Association Research Committee on Asian and Pacific Studies, IPSA RC18, and particularly through the efforts of Professor Meena Bardia, Vice Chair of IPSA RC18. With Professor Bardia at IPSA's Research Committee on Asian and Pacific Studies, since 2014, she's been instrumental in outstanding innovation and in administration of international conferences at JNVU, such as the Jodhpur International Conference on South Asia in Global Perspectives, Democracy, Human Rights, and Nation Building. That was a UGC-sponsored international conference jointly organized by the Department of Political Science at JNVU in Jodhpur and the International Political Science Association, RC18, headquartered in Montreal, Canada. Since that international conference in Jodhpur, Professor Meena Bardia has also maintained exceptional work as Vice Chair of the Research Committee on Asian and Pacific Studies, as a panel chair, discussant, and paper presenter at World Congresses in Canada, Poland, Australia, and happening virtually online this year. Now, the International Political Science Association, IPSA, was founded under the auspices of UNESCO in 1949. It's an international scholarly association and world organization under which there are national affiliations of political science associations. IPSA is devoted to the advancement of political science in all parts of the world. During its history, it has helped build bridges between East and West, North and South, and has promoted collaboration between scholars in both established and emerging democracies. Earlier today, I had the occasion to speak with the founder and founding chair of IPSA's RC18 Research Committee on Asian and Pacific Studies, Dr. Taekwang Chang, who attended the first international conference that Professor Bardia so successfully organized in Jodhpur. He sends his warmest and very best wishes for this momentous occasion today. And he remembers fondly the beautiful Bardia family and great community that came from all over India and worldwide for that conference. Now, I'd like to share a vision and saying that he carries that continually inspires me. That is our responsibility to promote world peace and human harmony. Today's event, with over 1,000 participants registered and more attending as we speak, this webinar comes at a time where the world is experiencing events of unprecedented magnitude across the globe. The challenges in India or the United States or anywhere throughout the world is not limited to just one country or region. The social unrest, the frustrations, as well as the hopes and camaraderie are felt across and affect the entire globe. This webinar helps bring us together to dialogue and motivate possibilities. More than ever, we do need to embrace the wise words of the 96-year-old founder of IPSA's Research Committee on Asian and Pacific Studies, Dr. Taekwang Chang's vision for us to continue in attaining world peace and human harmony. During our challenges, especially as we face the second year with the pandemic, we often may wonder what an individual, one person, socially distanced and isolated, can possibly do. I'd like to share an example. Prior to 45 years ago,
in 1976, the World Organization on Political Science was Eurocentric and did not address Asia at all. It was one person with a vision of establishing and championing Asia's importance that made it possible. And what has now become not only among the most popular areas for political science scholarship and significantly seen at the World Congresses, but reflects over 60% of the world in the people of Asia, as the people of Asia are the world's majority. We are not alone. Yet, one person can make all the difference. At IPSA and our research on Asian and Pacific Studies, Dr. Taekwon Chang established RC18 in 1976, providing the vision, energy, dedication, and perseverance to develop an excellent foundation for future generations. You are that future generation. You can make that difference. You can make that difference for world peace and human harmony. So let's work together and make that happen. This webinar with the upcoming illustrious speakers is an excellent catalyst for great things to come. And it all starts with you. I'm Dr. Angeline Chang, Chair of the International Political Science Association's Research Committee on Asian and Pacific Studies, IPSA RC18. I invite you to be in contact and thank you for your contributions to world peace and human harmony. Enjoy. Dr. Gehlot, please unmute yourself. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। आपने बहुत सुंदर शब्दों में ये बात कही कि कोरोना का ये जो संकट है वो किसी एक देश से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी मानव सभ्यता के लिए संकट है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका ये जो उद्बोधन, आपकी ये जो स्पीच है, हमारे जो डिजिटल मंच से जो हजारों विद्यार्थी, शोधार्थी और जो शिक्षक साथी जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और आमंत्रित करने से पहले कुछ पंक्तियां उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि फूलों की तमन्ना हो तो कांटों की चुभन से मत घबराओ। फूलों की तमन्ना हो तो कांटों की चुभन से मत घबराओ। जो हाथ कांटों से डरते हैं उनको फूलों की खुशबू नसीब नहीं होती है। जो हाथ कांटों से डरते हैं उनको फूलों की खुशबू नसीब नहीं होती है। हम लोगों ने जब इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में सोचा तो बहुत सोच समझकर जब हमने ये थीम रखी, जिसमें एक पक्ष हमने प्रशासन रखा, दूसरा पक्ष हमने नागरिक समाज रखा। हमने इस वेबिनार में आपने नोट किया तो 2 की नोट स्पीकर रखे हमने। एक प्रोफेसर अशोक शर्मा जी है और दूसरे प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी है। प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी को मैं आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस डिजिटल मंच से जो लोग जुड़े हुए हैं वो केवल पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स और विद्यार्थी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, और प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी का जो नाम है वो केवल राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के शोधार्थी जो अध्येता है उनके लिए नहीं, बल्कि उससे इतर अन्य जो डिसिप्लिन है, अन्य जो अनुशासन है, उसमें भी काफी पॉपुलर है, काफी लोकप्रिय है। प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी का जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, उन्हें केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी कई राज्यों में और देश से बाहर भी कई जगह पर लोग आपको जानते हैं। ऐसे प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी आज हमारे कीनोट स्पीकर है। उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, देश के 2 नामी विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने अध्ययन किया, और वर्ष 2008 से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आपने प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू की। वर्ष 2020 इसी कोरोना संकट के बीच में ही आप प्रोफेसर पद से वहां पर सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके अधीन लगभग 21 विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया, 3 से अधिक लोगों ने पीडीएफ किया। आपने कई सारे, हम लोग जब राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब उनके बारे में सुनते हैं तो अक्सर जब सैफोलॉजी की जब बात आती है, मतदान व्यवहार की जब बात आती है, तो प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी को हम लोग राजस्थान में मतदान व्यवहार के प्रवाची के रूप में देखते रहे हैं।
प्रोफेसर लोढ़ा जी, न केवल मतदान व्यवहार बल्कि आपका राज्य की जो राजनीति है, चुनावी राजनीति है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, शासन और विकास जैसे मुद्दों पर भी आप अपना विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा आप यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ICSSR और NCERT, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं से लंबे समय से आप जुड़े हुए रहे हैं। आपने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में डायरेक्टर नेहरू स्टडी सेंटर के रूप में आपने काम किया है। आपने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज के डायरेक्टर के रूप में भी आपने काम किया है। वहाँ विश्वविद्यालय में आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए डीन के रूप में भी आपने काम किया। कई देशों की आपने यात्राएं की। यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने एकेडमिक कंट्रीब्यूशन इन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में दिया है वो अभिनंदन योग्य है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में आप संपादकीय टीम में आप शामिल रहे हैं। देश भर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई सारी फेलोशिप को आप प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी को हम की नोट स्पीकर के रूप में पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी से कि आप अपना उद्बोधन देकर हमारे डिजिटल मंच पर, सर मैं बताना चाहूंगा इस डिजिटल मंच पर 1000 से ज्यादा लोग तो रजिस्ट्रेशन वाले जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इसका यूट्यूब पर भी लाइव हम लोग कर रहे हैं, तो हजारों लोग आपको सुन रहे हैं। प्लीज प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी। Thank you, coordinator of this international webinar, Dr. Dinesh Gehlot. Good morning to all the participants of this international webinar. I am greatly honored and privileged to be one amongst the participants this morning in this international webinar, which is of crucial significance and importance, not only for the academic fraternity in India, but I think all over the world. Well, Chief Guest Dr. Angeline Chang, Chairperson of Research Committee 18 on Asia and Pacific Studies, International Political Science Association, patron of this international webinar, Honorable Vice Chancellor, Professor P.C. Trivedi, Narain, Vyas, University, Jodhpur, Head of the Department of Public Administration, Professor J.S. Shekhawat. The key figure behind this international webinar, Dr. Meena Bardia, Professor, Department of Public Administration, Dr. Gehlot, of course, Dr. Charu Bhurat, and all my friends who have taken time to attend this international webinar. Now, the theme which has been set for this international webinar is something which affects us all. We have been facing different kinds of problems, crises, critical times over the last 16 months, coping up with COVID-19 pandemic challenges before the administration, and civil society. At the outset, I'd like to say one thing, that the manner in which this theme has been framed, to me personally, it appears to be some kind of a binary. As a political scientist, as a student of political science, and somebody who has had some association with the manner in which democracies have evolved, not only in India, but in other parts of the world, and especially the way in which different governments all over the world have faced or confronted the crisis, the pandemic crisis, over the last 16 months. Personally, I look at this theme in the form of a binary between the efforts made by administration on the one hand and civil society on the other hand. Why I look upon this as a binary, as I progress in my presentation, you'll be able to understand it, I hope. Now, even after 16 months, the first thing which I want to put before you is that still today, that is 26th of May 2021, we don't know how COVID-19 came, and we don't know how and when it is going to leave us. We even don't know how many people have been infected all over the world, and I'm talking more in the context of India, and how many deaths have taken place over the last 14-15 months. And here I'd like to bring to your kind attention something which appeared in New York Times yesterday, and I'm sure Dr. Angeline had a time to look at this. This has been a report filed by
two of their critical chief correspondents, Lazario Gamio and James Glantz. And in this news report, they have given certain figures which are very alarming, disturbing, and threatening, especially for people in India. What does it report? What does this report say? On the first hand, they have pointed out the official count of people who have been reported to be infected by the virus. And they've also talked about the reported death. This is the official count, according to which as on 25th of people in India were infected by this virus. And we had more than 3 lakh reported deaths as far as the official count is concerned. But there are 3 other figures which also have been given in this piece. One is a conservative scenario which has been given by these reporters, which says that maybe the reported cases are in the vicinity of 404 millions, and the number of reported deaths are 6 lakh. A more likely scenario, according to this duo, is that the number of infected is about 539 millions, and the number of people who have succumbed to COVID crisis, this pandemic, is 1.6 million. And the worst case scenario, which both these people have pointed out, is that more than 700 million people in India have been infected by COVID-19. And the worst case scenario, as far as the death count is concerned, comes to be about 4.2 million. So the point which I'm trying to make here, friends, is that even today, we don't know what exactly is the cause, why Corona came all over the world. People talk about Wuhan, the Wuhan virus, the Chinese virus. It's an insult to the Chinese people, and I'm sure Angeline will bear me out on this point. How this virus will go, is vaccination the answer? If vaccination is the answer, I'd also like to bring before you a recent report in Life Site News given by a Nobel laureate of medicine in 2008. I'm talking about Nobel laureate Luc Montagnier of France, who pointed out on 19th May that all those people who have been vaccinated twice are going to die within 2 years. And this vaccination is an enormous mistake, a scientific and medical error. And vaccination itself is creating new variants of the virus. So even here, is vaccination the answer? We don't know. So much has been written on the pandemic, different dimensions of pandemic over the last 16 years. And the more we write about it, the more confusion is there. I'd like to begin my presentation with this background by quoting none other than Charles Dickens. These are the opening lines from one of the famous novel written by him, Tale of Two Cities, which in a way presents the binary which I pointed in the beginning, the binary between administration and civil society. And I quote him. Charles Dickens wrote in the opening lines of this novel, "It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair." So in a way, what I want to say is that these lines or these words of Charles Dickens in Tale of Two Cities applies to the binary between administration and civil society, especially when we speak from the Indian experience. The expectations from the state, I'm not only talking about the union government, I'm also talking about different state governments. So much was expected from the state, but I'm a little hesitant, but I'd like to say this, that the state in facing the pandemic has failed miserably, not only at the national level, but also at the different state levels. And whatever hope, whatever spring or whatever good thing we can say is that about the civil society, which has done a great job in India and in different parts of the world. In this presentation, friends, I'm going to raise two theoretical questions because it's as a student of political science and as somebody who has done some amount of research and some amount of reading
different kinds of articles which have appeared, different kinds of researches which have appeared over the last 14, 15 months. There are two theoretical questions which I'd like to answer, which I'd like to pose before you. There are so many students and teachers and researchers in this international webinar. I'm sure they'd like to address these two research questions. The first question, friends, is what is the relationship between pandemic on the one hand and state capacity or incapacity, as well as the capability approach of Amartya Sen on the other? This is one question which I'd like to answer or address in my presentation. And the second thing, which is related to the second part of the theme of the seminar, which relates to civil society. And the question goes like this. Do places with high degree of social capital or civil capital, enjoying high levels of social trust and strong institutions, perform any better than those that suffer from lack of social capital in tackling the pandemic? So these are the two research questions which I'd like to address during my presentation. Now, coming to the first one, which talks about the relationship or questions the relationship between the state on the one hand and the pandemic. What has been the capacity, what has been the capability of the state in tackling the pandemic crisis? And what is the capability approach which Professor Amartya Sen has discussed? In this, the first thing which I'd like to do is to present before you very briefly a chronology of the pandemic before you, how things have evolved in India over the last 15 months. Most of you are familiar with it, but I think this is the right time when the right chronology has to be presented before you to make a sense of what has happened in the country over the last 15 months. As all of us know, the first case of pandemic of COVID-19 appeared in India on 27th January 2020 in Thrissur in Kerala. After that, it started spreading to different parts of the country, and on 23rd March, the Union Government of India imposed a nationwide lockdown, complete lockdown, which continued till 31st of May. We are going to complete 1 year on 31st of May 2021. We are going to make the first anniversary of the lockdown. And this lockdown was imposed in 4 phases. After 31st May 2020, that is from 1st of June, the phase of unlocking started, and it continued till 31st March 2021. And it continued in there were 10 phases of unlocking the country from 1st of June 2020 to 31st of March 2021. In the months of January and February, if we look at these things in retrospect, it affects really incredulous that in the months of January and February, our Honorable Prime Minister, in an international gathering, declared that India has won the war against pandemic. In the following month, in February, the ruling party, the Bharatiya Janata Party, in one of its meetings, congratulated the Prime Minister for having achieved this victory. And in the months of February and March 2021, we started in India what is known as vaccine diplomacy, or what we call as vaccine maitri, vaccine friendship, in which we distributed or gave 66 crore vaccines to more than 90 countries all over the world as a part of what Angeline was just talking about, international peace and international harmony. We were generous enough to export 66 crore vaccines to 90 or more countries. On the first phase of vaccination in India started from 16th January 2021, and those who took the vaccine were health workers and frontline workers. The second phase for plus 60 years started from 1st March 21. The third phase started from April 1 for people from 45 to 59 years. From 11th to 14th of April, at the call of our Honorable Prime Minister, we had the Tika Festival or the Tika Utsav or Vaccine Festival for 4 days. The fourth phase of vaccination started from May 1, when we said that people from 18 to 45 years will be vaccinated. And on 14th May, very recently, the Government of India declared that 2,000 crore vaccination will be made available to country from August to December 2021. Now, the latest record as far as vaccination is concerned, friends, on 24th, I have the report from 24th May 2021. So far, starting from January till
24th of May, only 11% of the population in India has received one dose of vaccination, and only 3% have received both the doses, as far as the Government of India statistics tells us. Very surprisingly, while on 23rd of March 2020, the Prime Minister declared a nationwide lockdown, when the second phase started sometimes towards the middle of March, the Prime Minister, even after the request from so many chief ministers, because Dr. Dinesh Gehlot was talking about the participation of chief ministers in confronting the pandemic, there was repeated requests by different chief ministers of different provinces of India to our Honorable Prime Minister that please again declare a nationwide lockdown. But the Prime Minister, in his great wisdom, said, no, it is not going to be a national lockdown. If the states want, they can declare lockdown on their own. So starting from middle of March till even today, different states are declaring their own state-based lockdowns. In Rajasthan, we know that even, only day before yesterday, the Chief Minister declared that the present lockdown is going to continue till 8th of June 2021. So the states were left on their own as far as declaration of lockdown is concerned by the Honorable Prime Minister. Now, another issue which needs to be brought out here as far as chronology is concerned is that apart from state-based lockdown, what incredulously happened was that on 19th April 2021, the Government of India empowered state governments to procure additional vaccine directly from the manufacturers. Now, if you read newspapers every day, only yesterday there was a report in a number of newspapers that in the last 1 month that different state governments have gone to the international market floating global tenders. Most of the global companies like Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson have refused to supply vaccines to state governments. And all the time, these companies have been saying that we are going to deal only with the Government of India as far as international buying is concerned. So now we are in a situation where 1 month again has been lost. We lost a lot of time between August to January, February, when the Government of India and different people were busy with different kinds of elections, different kind of religious festivals. And we are in a situation where the worst case scenario estimate, according to New York Times, friends, is that more than 4 million people in India have already died, although the government statistics is saying that only 3 lakh people have died. Now, this shows the problem of state capacity. The first question, the first theoretical question which I raised before you, friends, is what is the relationship between pandemic on the one hand and capacity or incapacity of the state in dealing with such a situation? My problem is that, and this is the problem of an average Indian, if you look at what kind of pictures are appearing in different kinds of newspapers in Uttar Pradesh on the riverbeds of the holy river Ganga, it's frightening, it's terrorizing, it's humiliating, it's insulting for the country. And what is worse is that when in the first phase, we found that number of reports came at the international level, whether it was pandemic report by VDEM, that is Varieties of Democracy, the Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden, or whether it was Freedom House, whether it was Transparency International, whether it was Human Rights Report, Indian position in number of indexes came down, and people said that India is a flawed democracy, India is partly free, India is a electoral autocracy, and so different kinds of adjectives were given to India, which shows that, and why this has happened. This has happened, friends, basically because the starting of the whole process when the Prime Minister declared a nationwide lockdown without consulting any of his cabinet ministers, without consulting any of the chief ministers, without properly thinking as to what is going to be the impact of this lockdown. We all saw from March till June, July, lakhs and lakhs of people left the metropolitan cities on their feet, coming back to their villages, traveling thousands of kilometers. Many of them perished in the process. There were the kind of support which we expect from
a state which is supposed to be a welfare state, a state which is supposed to be an ethical caregiving state, a state which is supposed to be full of compassion and empathy, it failed miserably in dealing with the crisis caused by the migration of lakhs and lakhs of people, which is known as reverse migration. If you happen to look at a website by PARI, an NGO, People's Archive of Rural Asia, an organization developed by P. Sainath, you will get the latest figures as far as the distress of rural India is concerned. So it in turn became a farewell state. It was a state which hardly bothered for the plight of its citizens, for the misery of citizens. The kind of support, whether it is in the field of health, whether it is in the field of transportation, whether it is in the field of employment, whether it is in the field of medical assistance, again, all state governments tried to come up to the expectations, but then those expectations from the people of India were not fulfilled by the state. So the point which I'm trying to make here, and if you look at the recent scenario to which Dr. Dinesh Gehlot pointed out, and even Dr. Meena Bardia in her opening remarks pointed out to the latest crisis, where we have so many people who are standing in queue in the hospital, deprived of the basic medication, deprived of oxygen, deprived of ventilators. And the worst thing is that they were deprived of dignity in death also. There was no place for them, for their dead bodies in regular crematoriums, and makeshift crematoriums were built overnight, and people were buried all over the place. So this is a major crisis, and the manner in which this crisis should have been tackled by the state machinery all over the country, barring a few rare exceptions. I'm sorry to say that the state has not shown the capacity. What is worse, friends, is that instead of at least admitting that something has gone wrong somewhere by the government of India, by its ministers, those who matter, what unfortunately has happened is that the government of India continues to live in some kind of a denial syndrome. They continue to say, no, the situation is not all this bad, bypassing all the national and especially the international reports. What is worse is that the government has taken an aggressive stance. And here I'd like to, this is something which needs to be appreciated, because there is some kind of depression, a lot of depression all over the country. And the recent attempt which was made by the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RSS, in collaboration with the Bharatiya Janata Party, in what is declared as the Positivity Unlimited. So there was 3-4 days Positivity Unlimited drive in which different speakers came. I was particularly struck by the speech which was made by the founder of Azim Premji, who said that science has to be given the right place if the pandemic has to be tackled. But is the government of India giving proper space to our doctors? Is proper space being given to the scientists? Is proper space being given to the epidemiologists? I am amazed to see cardiologists, cardiologists speaking on behalf of the government of India, speaking on behalf of the Indian Council of Medical Research, talking about the pandemic. The best thing would have been that we should have approached epidemiologists to speak about what is happening in the country. That has not happened so far. So this is the first thing which I think we as students and researchers of political science need to work on. And what Amartya Sen pointed out, that the capacity or the capability of the state is very important in tackling the whole crisis. Another political scientist, in fact, somebody who has worked on pandemic for the last 15-20 years, who belongs to Wharton School of Management. I'm sure Angeline must be aware of the work which has been done by Mauro Geard, in which he has pointed out that the pandemic has been felt more, that the adverse impact of pandemic has been felt more in those countries where there is high level of inequality and high level of state incapacity. India fits in that category. If you look at the newspaper reports over the last 2 months or 3 months, the number of billionaires and trillionaires have increased in India. But the number of people who have fallen below the poverty line has also increased tremendously.
So the kind of inequality which exists, the kind of poverty which exists in India, versus the impact of pandemic, because the kind of the slogans which were brought before us by the Honorable Prime Minister, and I'll narrate these slogans before you. The first slogan which Honorable Prime Minister gave to us was "Jaan hai to jahan hai." The second slogan which he gave to us through so many mobile messages, "Do gaj ki duri, mask hai zaruri." The third one which came to us was "Jab tak dawai nahi, tab tak dhilai nahi." That's, we have to follow whatever guidelines the government has given. The fourth is, when the unlocking phase started, "Jaan bhi, jahan bhi." The fifth which came after the vaccination came was "Dawai bhi, kadai bhi." And the sixth one which has come, the last one which has come from the Honorable Prime Minister, the slogan, the jumla is "Jahan bimar, wahan upchar." People are not getting enough place to be, their bodies to be buried. These are the different kinds of slogans which have come to us over the last 14 months or 15 months. Now, why I'm pointing out these slogans to you is that when you look at the analysis given by Mauro Guerin, he says that social distancing or physical distancing is impossible for people who live in absolute poverty, who live in absolute deprivation. Imagine people living in slums in Dharavi or in different parts of the country. Is it possible for them to shun their job? They are people who earn their daily bread and eat on the basis of whatever wages they get during the day, after the day is over. So all these guidelines were very difficult for people who were living in abject poverty to follow, who were living on a daily basis to make their two ends meet. So the first question, friends, which we need to work on which we need to do research, on which we need to do a lot of reading, is the relationship between pandemic on the one hand and state capacity and the capability approach pointed out by Professor Amartya Sen. Now, coming to the second binary, and after that I'll conclude this presentation. This is the question which relates to the role of social capital, because Dr. Dinesh Gehlot referred to the exemplary efforts made by civil society in India. And the question here is, those countries or those societies which have high degree of social capital, samajik punji, have they been able to tackle pandemic in a more effective way compared to countries or societies or communities or cities or villages which have less amount of social capital? Many of you will be aware of the fact that the thesis of social capital was given by an American sociologist, Robert Putnam, when he studied Italy, different parts of Italy. He did a comparison between North and South Italy. He also studied families in America. He's based in Harvard. So what is social capital? Social capital is something which is not directly related to politics. This is how we can define social capital. All the parts of society that, without being explicitly political, foster links and bridges of common sympathy and trust. We have a number of institutions which, because in the opening remarks, Angeline Chang was talking about Asia and how Asia became a part of International Political Science Association in 1976. And Asian societies, all of us know, are totally different from Western societies. And there are people like Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, people like Gandhi, Nehru, who have talked about the culture, civilization of Asian societies. So culturally, and as far as civilization is concerned, we are supposed to be rooted in our society. We are supposed to be rooted in our family. The individual is much less important in our social scheme of things than the family and the community. So civil society or social capital are very important. And when the pandemic broke, and when we found that the state was totally incapacitated in dealing with different kinds of issues which were emerging before, because of the lockdown, because of the health hazards, because of lack of proper food distribution, because of lack of proper medical assistance, and so on and so forth. It was the civil society which
came up front in the country. We had so many organizations, so many individuals which helped the migrants, helped them in transporting, helped them in feeding them, helped them in giving some kind of cash relief. These are things which happened, which shows, friends, that in Asian societies, there's a high degree of social capital or high degree of togetherness, or what is called as commonplace civilization. We have our own coffee houses, we have our own chopal, adda in Jodhpur, from where this program is being organized. A very popular term, because I also belong to Jodhpur, something which is called as GOAT, which are social picnics, by which social camaraderie is further strengthened. We had Gandhi's ashram. Another popular term in Jodhpur is hatai, how you start discussing things in public forums, in private forums. So these are the agencies through which social capital and civil society is strengthened and consolidated in Asian societies, especially in a country like India. And the work which was done by the civil society over the last 14, 15 months, even today, when there's such a great health hazard in the country, as all of us know, we repeatedly, regularly hear about the exemplary work which is being done by the Sikh community, the Gurudwaras, in supplying not only food and medicines, but also mobile oxygen cylinders are being circulated by the community. And so many other communities have also come forward. So in the beginning, I started saying this, that the theme which has been set for this international webinar, in my mind, to my mind, there's some kind of a binary. On the one hand, you have the administration, you have the state, which has somehow failed to live up to the expectations of the people, the kind of service which should have been given, this kind of assistance, the kind of compassion or empathy, the care which should have been given by the state. Somehow the state, especially the central government, has not been able to live up to those expectations. And that vacuum or that gap, to some extent, has been filled by the civil society. Even today, if you look at the newspaper, the chief minister is there, the chief minister of Rajasthan is there on the front page. And it's an open call from the chief minister to the society that the government has its own limitations. We all agree to that, and when we are talking about a minimalist state because of liberalization, privatization, and globalization, the maximalist state is nowhere to be seen. Unfortunately, in countries of the advanced West, or even in North America, the kind of solace, the kind of succor which was given by the state in America, in Canada, in European countries, although we say that they are privately controlled countries, there's free market economy, but in those countries, the state went out of its way in helping the people, giving them cash, giving them medical assistance without charge, and so many other things. But the same thing which should have happened in India somehow has failed to happen. So towards the end, what I'd like to say, friends, is that how to come out of this situation? The only way we can come out of this situation, the crisis we are in right now, and as I pointed to you, whatever this Nobel laureate from France is talking, saying that all those people who have had 2 rounds of vaccinations are going to die within 2 years. This is even more frightening. So people will have they'll have doubts about the whole process of vaccination. So I think the state has to come up front in admitting that whatever it needed to do, it has not been able to do so far. It has to accept that there are certain limitations, as the Chief Minister of Rajasthan has pointed out today so openly, that the state has its own limitations. There have been certain mistakes which have been made by the state, but once you have admitted your mistake, the path towards recovery starts from there. And there you have to ensure that all these jumla bazi, all these slogans are good for a while, but there comes a time when you have to sit down on the ground, discuss with people, discuss with other opposition parties, come to a common platform, make an all India-wide policy as to how to tackle this, because we are told that sometimes in July or August, the third wave is going to come and it is going to affect our children. That is going to be worse. So an all India policy
framed by the central government in collaboration with the state governments, in collaboration with the opposition, has to be there. If possible, a national government can be formed, and then accordingly, based on our own resources, in complete collaboration with the civil society. And it's so unfortunate that when this government came to power in 2014, one of the first steps which was taken by this government was to make very fundamental changes in the FCRA rules. Now, what has happened because of that, that so many international organizations which earlier used to give a lot of funds to Indian civil society organizations, that has stopped because of these changes in the FCRA rules. So FCRA rules also have to be in a way made lighter so that more assistance can come from different countries, different international organizations like Amnesty International, Red Cross and other organizations. So it has to be a collaborative approach. It has to be an inclusive approach. I'd like to point out a report which talks about the failures of the government. There are 7 types of violations according to Pandemic Democratic Violations Index, which is known as the PANDEM. 7 major violations which have been done by the government of India, and each of these are worth enough for a research thesis. First is discrimination against minorities. We all know what happened during the first phase of Corona, when a particular community was pointed out as super spreaders. We know what happened after the Kumbh Mela recently. The second violation is that of fundamental right. Third is excessive use of force. Fourth is absence of a time limit of emergency measures. How long the lockdown is going to continue, the government has to be more transparent about it. The fifth is limitations on the legislature's ability to restrain the executive. Why is the legislature there? Why is the parliament there? To caution the government, to look after the government, that the government works properly. Unfortunately, meetings of parliament have not taken place. Campaign about COVID patients' death recovery. I just pointed to you the news report which appeared in New York Times yesterday, the kind of gap which exists between official statistics and what is the worst case scenario. And all this business about Tali, Thali, Diya, Corona Bhagao, road marches, and what this person has been doing, Baba Ramdev, over the last 2-3 days, the kind of statements which he has made totally goes against the 8th fundamental duty mentioned in the Indian Constitution relating to scientific temper. In fact, he should be booked. He should be put behind bars because he's talking nonsense, saying that 1,200 doctors have died after 2 doses of vaccination without checking the facts at all. What he has been saying about the medical fraternity in India, it's all illegal. It's violation of the Constitution, and there has to be legal action against Baba Ramdev by the government of India as soon as possible. And 7th is restraint on media freedom. All these 7 violations of the democratic credence in India has been pointed out by Pandem. The report which has been done by University of Gothenburg, Department of Political Science, Stefan Lundberg has been doing this research regularly. Every year they come out with a report on how democracy has evolved in different parts of the world. It is known as VDEM, Varieties of Democracy. So the democratic journey of India has to be strengthened more. More and more people have to be involved in the process of confronting this pandemic. Only when it is a collaboration between the state and the civil society, between the central government and the state governments, between the ruling party and other opposition parties, all have to come together. Only then we can say that the country can wage a real war against this pandemic, and we can also come out by facing this and helping other communities, other countries in the global community. I'd like to thank the organizers for giving me this opportunity to share my thoughts about the entire crisis, the coping up strategies, what are the challenges which exist before us. Thank you again. Thank you, Professor Sanjay Lora, for your enlightening words. So I really liked your approach of how you kind of framed the 2 research questions, and you systematically answered those questions in terms of the first question about relationship between pandemic
and how you could say the state has been tackling the crisis and capability approach of Amartya Sen, and about the second research question where you address about that the places where there's high degree of social capital, they also enjoy high degree of effectiveness rather than the ones where there is less amount of social capital. And I totally agree to what Professor Sanjay Lodha said in his entire lecture about the role of civil society, of how important it has been with respect to a developing country like India. And in the times when we needed that support from the state, rather the civil society was standing as a very strong pillar in these tough times of the second devastating wave of COVID-19. Thank you so much, sir, once again for your enlightening words. I'm sure the audience must have gained a lot by your kind words of wisdom. Okay, moving ahead, we'll be taking this webinar ahead, and with deep pride and humility, I would now want to introduce our next keynote speaker, Professor Ashok K. Sharma. He is the former UGC Emeritus Fellow in Public Administration, University of Rajasthan. He is former head, Department of Public Administration, University of Rajasthan, and also served as the principal of University Rajasthan College, University of Rajasthan, Jaipur. He has an experience of 33 years teaching PG and UG courses, and there have been almost 40 students who have been awarded the degree of PhD under his supervision, and 50 candidates have written their MPhil dissertations under his supervision. There are various books that he has written, such as Bharat Mein Loktantra aur Nirvachan, State Administration in Rajasthan, Prashasnik Tantra, Kendriya Rajkiya Evam Sthaniya, Administrative Institutions, Local Government in India. These are some of the books that he has written. He has more than 70 articles published in different national, state level journals and newspapers, and he has written 25 lessons for the Institute of Correspondence Studies, University of Rajasthan, Jaipur. He has won various awards like Hindi Sevi Samman by Kendriya Hindi Sansthan, Agra, awarded by the Honorable President of India in 2017 for his excellent Hindi writings in public administration. His book, Bharat Mein Sthaniya Prashasan, is awarded prestigious Sardar Vallabhbhai Patel by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India. He has worked in various prestigious positions such as Secretary Staff Council of Institute of Correspondence Studies, University of Jaipur. Just a second. He has also been the Joint Secretary and Vice President of Rajasthan University Teachers Association, RUTA, and he has served as member of Board of Studies of MDS University, Ajmer, Kota Open University, MLS University, Udaipur, and Narain Vyas University, Jodhpur. He has served as convener, Board of Studies in Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, and Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer. He's been a member of Senate and Academic Council, University of Rajasthan, Jaipur. He's also been on the convener panel on public administration, Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur. He served as member of Academic Council, Mizoram University, and also served as UGC nominee on SA program, SAP Department of Political Science, University of Guwahati. He has worked in various capacities in University Grants Commission, which is the apex body in the field of academics in India. So some of the positions that he has held is dealing with major research projects, examiner Net Bureau, expert member on Net Bureau Committee, UGC Net Examination Syllabi Revision Committee, New Delhi, as an expert member on committee constituted for Emeritus Fellowship and expert member on committees visiting different autonomous colleges. He's also served as an expert in the UPSC and different state public service commissions. He has visited around 15 countries and presented papers in various international seminars and conferences in countries like USA, UK, Switzerland, France, Sweden, Germany, etc.
He has had a visit to Finland and France under cultural exchange programs, and he's been nominated by UGC and ICSSR for these respectively. He has attended dozens of national seminars and conferences of political science and public administration, and even organized a lot of seminars on different themes. He's also organized 2 training courses on research methodology in social sciences, sponsored by the ICSSR New Delhi. So it is a great honor to have your esteemed presence in this webinar here. We hope to be edified by your words of wisdom. Welcome you, sir, once again. Thank you, Charu, for such a detailed introduction about. Thank you very much. After listening to Professor Lodha, in the initial words, I would like to thank Professor P.C. Trivedi, the Honorable Vice Chancellor of Narain Vyas University, and Professor Meena Bardia, convener of this seminar, international webinar, for inviting me to be with you. I feel really honored to speak in this international webinar. As we attempt to analyze the prevailing conditions in the current pandemic times and try to ascertain the challenges that we face, it is pertinent here to recall United Nations resolution called 2030 Agenda. These are the Sustainable Development Goals, which were framed in 2015 and were intended to be achieved by the year 2030. Amongst these is the Goal 3, good health and well-being. It calls for ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all the ages throughout the globe. This goal aimed at ensuring the gearing up of health infrastructure in every country so that every person could get medical attention whenever they need it. 4 years later, the Sustainable Development Goals were launched. We are facing the greatest health debate of our times. The Goal 3 recommends to work towards better health infrastructure. But India has a history of dismally low spending on health. It has always hovered around only 1% of our GDP. Only 1% of our GDP. हमारे लिए चिंता और चिंतन दोनों और एक तरह से शर्म का विषय भी है कि हमारे नीति निर्माताओं ने स्वास्थ्य के बेहतर संरचना के निर्माण को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं, आरंभ से लेकर अब तक. Our policy planners never thought of giving it precedence. 2/3 of the government expenditure on health comes from the state governments. Experts are doubtful of realizing the targeted 2.5% expenditure in the next 5 years. सरकार ने या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो ये टारगेट दिया हुआ है कि जीडीपी का 2.5% शुड बी स्पेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 8-9 वर्ष में हम इस लक्ष्य को छू पाएंगे. So the collapse was imminent when the pandemic struck us in 2019-20. After the first wave ended, it gave an opportunity for our policy makers and policy shapers and the government as a whole to wake up and move fast. जब 2019-20 में इस महामारी ने दस्तक दी और फर्स्ट वेव की विभीषिका हमें डराकर थोड़ी शांत पड़ गई, तो केंद्र और राज्यों की सभी सरकारों ने सेकेंड वेव की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया. Rather, they neglected it. It was the time to wake up and move fast, but they did not.
The government should immediately begin a hiring campaign. It should recruit thousands of doctors and lakhs of supporting medical staff. एक रिपोर्ट में अभी WHO ने बताया कि भारतवर्ष में 4,55,478 डॉक्टर्स और 18,09,757 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता इस वक्त है. यानी lakhs of nursing and medical staff positions are lying vacant in the country. Apart from medical equipments, we need staff to support doctors in performance of their duties. Interns and doctors, this could be one solution. Interns and doctors in the final year of study should be roped in. They should be paid well and their duties should be honored. It is disheartening that thousands of resident doctors are compelled to work long hours for meagerly payments of 3,000 to 7,000 per month. ये अपने आप में एक चिंता और चिंतन का विषय है कि हम अपने डॉक्टर्स को महामारी के दौरान इतना गंभीर काम लेने के लिए उनको क्या सम्मान दे रहे हैं. Appreciation certificates for their hard duties is not enough. After all, their hard work and long working hours should be properly honored, not only in words, but in terms of proper remuneration also. We have ignored the opinion of experts from the medical fields. Virologists or epidemiologists were perhaps ignored. There seems to be complete absence of transparency as to how central government was taking decisions to fight the pandemic in India. How can the top bureaucracy of the year 2020-21 era be pardoned? And this is a very big question. The question here is, how can the top bureaucracy of 2020-21 era be pardoned or allowed to go free, unquestioned, for not being able to see the next wave of disease, for which the warning was issued by WHO also and the Indian experts also, and for letting them country go blindly into the hurdle without guard, without any preparation. This is related with the concept of accountability, friends, of a democratic government of the largest democracy. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व का ऐसा क्षरण हमारी लोकतांत्रिक अपेक्षाओं से बिल्कुल संगत नहीं है. 2/3 of our medical care in India is provided by the private sector. Much of its procedures have been allowed without any constraints and regulations. The private hospitals have abundantly displayed their lust and greed even in this dark hour. The government failed to step in and regulate the charges and fees of hospitals to protect the skin of common man. It is no secret that the common citizenry could not afford prolonged treatments at private hospitals, and all in the midst of black marketing of essential life-saving drugs. मित्रों, ये दृश्य किसी से छुपे हुए नहीं है कि सभी जिम्मेदार लोगों ने आम आदमी के दुख की इस बड़ी घड़ी में उसका खून चूसने के में कोई कसर नहीं रखी, और ऐसे लोगों पर हमारा तंत्र, हमारी सरकारें कोई कार्रवाई न कर सकी. सबके मन में ये गंभीर पीड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. Another question is recent amendments in the, जिसकी तरफ प्रोफेसर लोढ़ा ने भी ध्यान दिलाया. I also have to share this. Recent amendments in the Foreign Contribution Regulatory Act have imposed restrictions on channelizing the funds to other smaller NGOs working in the field. These laws, these imposed restrictions can be relaxed for the time being so that more help can be passed on to poor and needy in the affected areas.
This has to be given serious thinking, serious thought by Government of India. The next issue is, which pains us, is the vaccination issue. Vaccinations are, देखिए, इस महामारी के फर्स्ट वेव के समाप्त होते होते इस देश ने दुनिया में यह धमक तो उत्पन्न की कि हमने वैक्सीनेशन की खोज कर ली, किंतु वैक्सीन की प्रारंभिक बढ़त को हम बनाए नहीं रख पाए। जाने किस अनुभवहीन व्यक्ति ने सरकार से 18+ वाले लोगों के लिए टीका लगाने का फैसला करा लिया। परिणाम यह हुआ that vaccinations are dropping in India since March end. Due to ill planning and being horribly late in placing orders with vaccine producers, the result is that we have only begun vaccinating our youth population, At the current rates, it may take nearly 3 years to vaccinate the whole country. इसका समाधान की दिशा में सोचा जाना चाहिए. Door-to-door vaccination should be adopted. Many countries have already started supplying vaccines through pharmacies. The Drug Controller Department have failed to gear up their response to the surge in demands of life-saving medicines. When medicines demands shot up, the hoarding and black marketing of medicine should have been dealt with very strictly by the concerned officials of the government at both the levels, not only at the central level, but at the state level also. Thousands of people are still running around medical stores in search of elusive supplies. प्रशासन कहता है दवाओं और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जबकि त्रस्त लोगों का कहना है कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है. After all, one of them has to be correct. One of them is speaking truth. या तो जनता झूठ बोल रही है या सरकार, और हम सब जानते हैं कि जनता इस समय कितनी त्रस्त है और कौन परेशान है. Now come to the another point of public administration, that is accountability. Accountability mechanism have been found to be very weak. The parliament, our supreme body, is closed, not only having session, not having any session. The speaker also has turned down calls for holding meetings of the standing committees, which would have been served a fine mechanism for questioning our senior officials, including ministers, for their acts of omissions and commission. इस समय, that was the need of the democracy, that the parliament should have been allowed to work. But then let us talk about economy. Consecutive lockdowns have made our huge dents in the economy. Business have slowed down and small traders are the most hard hit. Since GST collections are shrinking, the central government is running short of finances. The share of states from the GST collection are being transferred at a slow pace. The states are themselves running short of finances due to dismal tax collection at their level. इसके परिणाम स्वरूप राज्यों को जीएसटी के हिस्से का जो वितरण है वो अत्यंत धीमा हो गया है और स्वयं राज्यों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से चरमरा रही है. और इस दृष्टि से इस संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की केवल बात न करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत हम राज्यों को भी संसाधन जब उनको जरूरत है उस समय उपलब्ध कराएं. Another issue which Professor Lodha has already taken up, migrants became a point of focus during the first lockdown. Their misery is compounded because there is still no policy to deal with migrants' crisis. The Niti Aayog was formulating a response to the crisis, but a final policy is still awaited.
Mostly the migrants belongs to the informal sector. They have no gratuity or PF or any other regular income flows to support them in crisis. The Manrega saw a huge spurt in registrations in the rural areas, indicating the desperate situation of unemployment. असंगठित क्षेत्र या दैनिक मजदूरी और छोटे कामगारों को कोई संरक्षण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इस महामारी के दौरान नहीं दे पाई है। यह इस तंत्र की लोक के प्रति उत्तरदायित्व के विलोपन और लोक के प्रति उसकी बड़ी विफलता का संकेतक है। हमारे नीति नियंताओं की प्राथमिकता में माइग्रेंट्स कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। The another issue which is affecting our students, education of students have also been hit. There is a huge urban-rural divide in terms of availability of resources to sustain online learning or e-class. The governments need to rethink its continuous and unrelenting emphasis on e-mode of education. The bureaucracy is exhibiting its elitist orientation and an absence of empathy for the have-nots of this country. Children left orphans or families who lost their breadwinners. The educational needs and other support for children in such families pose a huge challenge before our development process. Civil society and NGOs should be encouraged to adopt such children and families. Child trafficking would become a serious challenge if the society and government fails to come to the rescue of the orphaned children. इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं को मित्रों व्यापक प्रोत्साहन पूरे देश भर में दिए जाने की आवश्यकता है। नागरिक समाज की भूमिका इस संकट में काफी सराहनीय रही है। तदपि मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में अधिक स्वायत्तता दिए जाने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार ने अपने FCRA में जो संशोधन किए हैं उनकी वजह से जो कामकाज में उनके सामने संकट आया है उसको दूर किए जाने की कम से कम थोड़े समय के लिए आवश्यकता है। I would bring to attention that the panchayats, the foundational institutions of our decentralized democracy in India have been kept silent. यह स्थिति हमारे विशाल लोकतंत्र में शक्तियों के केंद्रीकरण का एक जीता जागता प्रमाण है। The coffers of panchayats and local bodies are lying empty. They are unable to offer any basic aid, assistance or relief to the sufferers whose livelihoods have been lost or to those who are ill. लोगों के मन में बड़ा सवाल है। When the nation can find money to build temples and a new palatial parliament house, we surely can find money to fund relief through local bodies and the पंचायती राज institutions. कम से कम एक निरोगी वातावरण के सृजन के लिए देश भर की इन संवैधानिक संस्थाओं जिन्हें हमने भारत के संविधान में संवैधानिक स्थान दिया है, लोकल बॉडीज एंड पंचायत्स को कम से कम हाइड्रोक्लोराइड के छिड़काव के लिए तो संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे। पूरा देश ढूंढ रहा है कहाँ है हमारा पंचायत मिनिस्टर, कहाँ है हमारा स्वायत्त शासन मंत्री जो स्थानीय संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को और पंचायती राज की संस्थाओं को हाइड्रोक्लोराइड के छिड़काव के लिए एक मशीन तक उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। Another point of concentration is cooperative federalism has come again into focus. The states are bearing the burden of treating the ill as healthcare is a state subject. Much of the blame for crumbling health infrastructure lies at their doorstep, but the federal agencies are not taking the voice of states into account. Their suggestions and requirements should be well heeded too. There should be no discrimination between the states. In vaccination planning, the states have been left to tend for themselves.
Even the pricing of vaccines is differentiated. The center cannot abandon the states. They are part and parcel of our union. All government and states or union would have to rise above political lines. वैक्सीनेशन के क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा कि हमने प्रारंभ में जो लीड ली थी उसे हम बनाए नहीं रख सके, और वैक्सीनेशन में जो पहल वैक्सीनेशन की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए थी, न जाने क्यों हम उसमें पिछड़ गए और उससे हम बाहर अभी आना नहीं चाह रहे हैं। ये पहला उदाहरण है, कम से कम मेरी याददाश्त में, मैं करीब 50 साल से राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ। ये पहला उदाहरण है जब केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। मित्रों, अब तक जो बात मैंने की उन सब में थोड़ी नेगेटिव पिक्चर दिखाई देती है, लेकिन पिक्चर केवल नेगेटिव ही नहीं है। सरकारों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने बजट की सीमाओं में पर्याप्त प्रयत्न किए हैं। कल रात को ही मैं इंडिया टीवी पर समाचार देख रहा था। हमारी राज्य सरकारें किस तरह से उदासीन है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में। ये एक बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत एक बड़ा देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। विकास की लिप्सा ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। भारत में दुनिया का सर्वोत्तम फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहली वेव में अमेरिका तक को हमने दवाई की सप्लाई की थी। हमारा मीडिया नेगेटिव न्यूज ज्यादा दिखाता है, सकारात्मक चीजों को ज्यादा दिखाता नहीं है। हमारे भामाशाह और हमारे एनजीओज, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे फिल्म स्टार संकट की इस घड़ी में बहुत सहायता कर रहे हैं। गरीबों को भोजन और राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक पहल की है। हमारे जो एनजीओज हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, एयरफोर्स, नेवी, एनसीसी कैडेट्स, होम गार्ड्स, डॉक्टर्स, नर्सेज जान पर खेलकर रोगियों की रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अब तो ऑक्सीजन की किल्लत भी दूर करने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मित्रों, आपदा की इस घड़ी में जमाखोरी, कालाबाजारी तो हम में से ही, हमारे बीच के लोग ही कर रहे हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक और 108 की जो रुग्ण दशा है, मरणोपरांत बॉडी के सम्मानपूर्ण विदाई का जो हम नहीं दे पा रहे हैं, ये न केवल राज्य की विफलता है मित्रों, ये हमारी अपनी विफलता भी है। लोक प्रशासन के विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि हमने हमारी क्लासिकल थ्योरी में सबने पढ़ा होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉर्ब थ्योरी है। पोस्ट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये मिनिमम फंक्शंस हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव को संपन्न करना चाहिए। मित्रों, मैं ऐसा महसूस करता हूँ इस समय कि न हम ठीक से प्लानिंग कर पाए हैं, न हम ठीक से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का निर्माण कर पाए हैं, न हम पूरी तरह से स्टाफिंग कर पाए हैं, न हम डायरेक्शन दे पाए हैं ठीक से, न हम कोऑर्डिनेट कर पाए हैं, और बजट तो हम उपलब्ध करा ही नहीं पाए हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्वास्थ्य पर खर्चा 2.5% बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और हम अटके हुए हैं अभी भी 1% तक, और इस महामारी से भी हम सबक नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारी सरकारों की, मेरे ख्याल से उनकी जो मानसिक दशा है उसका पर्याप्त प्रमाण है। The post-Corb theory should have been considered by our policy makers, by the experts. हमारा प्रशासन स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट कंट्रोवर्सी का आज तक समाधान नहीं कर पाया है। हमारे विश्व के जितने भी देश हैं उन सब ने एपिडेमियोलॉजिस्ट्स की और वायरोलॉजिस्ट्स की राय का सम्मान किया है, लेकिन मुझे लगता है महामारी के समाधान के क्रम में हमारे देश की सरकार ने इन विशेषज्ञों की पर्याप्त सहायता नहीं ली है। We are still depending upon the generalists, IAS, and they may be generalists, they are jack of all, but they are master of not anything. हमारा प्रशासन मुझे लगता है हादसा प्रेमी है। आग लगने पर ही वो सतर्क होता है और लगता है फिर से सो जाता है। हमारे निर्णयों में राजनीति हावी है सभी चीजों पर। लगता है लोकतंत्र का विकृत रूप भीड़ तंत्र अब दिखाई देने लगा है। हमने अपनी आबादी, जहां 72% आबादी गांव में रह रही है
और गांव के लोगों को 72% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर हमने, मुझे लगता है, 1% ध्यान दिया है। आप सी द रेशो, 72% को 1% अटेंशन, दैट इज ऑल्सो टू वीक। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि गांव की पंचायती राज संस्थाओं के संस्थागत चरित्र का कोई इस्तेमाल इस पेंडेमिक में हम नहीं कर पाए हैं। रोड़ा जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि द स्टेट हैज ऑलरेडी शोन इट्स लिमिटेशंस टू फेस, बट वेयर इज द पंचायती राज मिनिस्टर, वेयर इज द लोकल सेल्फ मिनिस्टर हु कैन स्ट्रेंथन दीज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जनता पर सीधे जुड़ी हुई जन संस्थाओं पर जिम्मेदारी जाती है लोक प्रशासन और महामारी में उनकी सहायता करने की, उनको हम सक्रिय नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रशासन को हादसे की इंतजार करने के बजाय फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव का अनुसरण करना चाहिए। वी शुड प्लान फॉर नेक्स्ट 10 years, नॉट फॉर ओनली 1 year। और अंत में मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान में से नैतिक ऊर्जा का, नैतिक बल का, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होगा, विकास करना होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, देयर इज नो ग्रेटर रिलीजन देन सर्विंग योर ओन पीपल। हमारे लोगों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सेवा परमो धर्म है। और इस सेवा परम धर्म को यदि हम, हमारे एनजीओ, हमारी जनता और हमारी सरकार, सारी प्राथमिकताएं समाप्त कर देनी चाहिए, सारी प्राथमिकताओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, केवल महामारी से लड़ना चाहिए। और विकास के 3 प्रमुख आयाम हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। हेल्थ इस समय खतरे में है और हेल्थ को सशक्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए इससे बड़ा मौका हमारे पास कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि इस चेतावनी का हम ध्यान देंगे और इस चेतावनी को समझते हुए जो नेक्स्ट वेव्स आने की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, उनमें हम सतर्कता से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकेंगे। मैं आयोजकों का, विशेष तौर से प्रोफेसर त्रिवेदी साहब का, जिन्होंने, और मीना वर्डिया जी का, दोनों का, तथा ऑर्गेनाइजर्स जो सेमिनार के हैं, टेक्निकल असिस्टेंट सहित गहलोत जी का, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सब लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से कोरोना की जो स्थिति है देश में, उसमें हमारे नीति निर्माता किस तरह से सही ढंग से इसको टैकल करने में असफल रहे, उसके बारे में आपने संकेत किया। बड़े सुंदर शब्दों में आपने ये बात कही कि हमारे फोकस पे जो स्वास्थ्य होना चाहिए था, उसको हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नहीं रख पाई। और 70 साल के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी जवाबदेहिता से, अपने उत्तरदायित्व से भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने एक बहुत सुंदर बात और भी कही। आपने कहा कि हम एक सिटीजन के भांति, हम एक नागरिक के भांति भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाए हैं। कालाबाजारी हम में से ही लोग कर रहे हैं, और ड्रग्स की ये जितनी भी जो कालाबाजारी है, वो जो लोग करने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं नागरिक दायित्वों का निर्वहन न कर पाना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सर, आपने जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन और ग्रामीण विद्यार्थियों को इस संदर्भ में जिस प्रकार की दुविधाओं का जो सामना करना पड़ा, आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको रेखांकित किया। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे हजारों मित्र आज इस यूट्यूब से, फेसबुक से और इस जूम ऐप से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को निसंदेह रूप से आपके इस एकेडमिक कंट्रीब्यूशन से फायदा मिलेगा। सर, थैंक यू वेरी मच। और आप हमेशा हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप आते रहे हैं, हमेशा आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। आगे भी आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन देते रहेंगे। एक बार फिर सर, लोक प्रशासन विभाग की ओर से, आयोजन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर गहलोत, एक बीच में अनाउंस करना था कि ट्रैफ के लिए अगर सब अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, तो हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले, और फीडबैक के लिए भी अगर आप बता देंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी जो हमारे साथी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों को जो फीडबैक देने के लिए कहा गया, वो फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और ये जो फीडबैक फॉर्म है, आज शाम तक 5 बजे तक आपको भरकर भेजना है, जिससे कि हम लोग समय पर आप लोगों को प्रमाण पत्र वितरित कर सके।
अच्छा, एक आपसे एक और निवेदन भी है कि मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग इसका एक ग्रुप फोटो ले सकें। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी अवसर भी आएगा कि जब ग्रुप फोटो इस तरह से लिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि समय की ये मांग है तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम इसकी यादें अपनी स्मृतियों में रख सकें, इसका एक ग्रुप फोटो ले सकें। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। Dr. Chang, could you please switch on your camera for the group picture? Dr. Angeline Chang. थैंक यू वेरी मच। दो कीनोट स्पीकर के इतने सुंदर उद्बोधन के बाद अब मैं मेरे विभाग के जो विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर JS शेखावत साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपना उद्बोधन दे। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि प्रोफेसर JS शेखावत साहब लोक प्रशासन विभाग में विभागाध्यक्ष तो है ही है, लेकिन आपका एकेडमिक और शैक्षणिक कार्यों में कितना रुचि है कि आप देखिए कि आप 2 माह बाद में विश्वविद्यालय से अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब प्रोफेसर मीना मैम ने इस संदर्भ में इनिशिएट लिया तो प्रोफेसर JS शेखावत साहब पिछले 7 दिन से इस संदर्भ में निरंतर फीडबैक लेते रहे किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन में लंबे समय तक कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान समय में आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में लोक प्रशासन विषय के विशेषज्ञ भी हैं। मैंने आपके अधीन ही अपना शोध कार्य पूरा किया है। तो मैं प्रोफेसर JS शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस अवसर पर अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर JS शेखावत साहब। थैंक यू दिनेश जी। लोक प्रशासन विभाग और IPSA द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। कोरोना संकट का मुकाबला करने में प्रशासन एवं नागरिक समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सरकार की तमाम सीमाओं के बावजूद प्रशासन अभी भी इसके समाधान हेतु डटा हुआ है। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का कोई विकल्प नहीं है। इस नाजुक समय पर इस विषय पर वेबिनार का आयोजन वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य ही है, लेकिन मैं आयोजकों को इस चुनौती को स्वीकार करने तथा इस प्रकार से आयोजन हेतु बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं प्रोफेसर अशोक जी शर्मा एवं लोढ़ा साहब का भी आभारी रहूंगा कि हमारे विभाग के प्रति उन्होंने अपना प्रेम दर्शाया एवं अपना अमूल्य समय निकालकर इस चुनौतीपूर्ण समय में अपना योगदान दिया, जिसके लिए हम उसके बहुत बहुत आभारी रहे। थैंक यू। मीना मैम। Dr. Bardia, please unmute yourself. You're on mute right now. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर JS शेखावत साहब। आपका इतना बिजी शेड्यूल था और आपके परिवार में एक इमरजेंसी भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर बर्डिया, आपका एको हो रहा है बहुत वॉइस, तो अगर आप एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो एको नहीं आएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नाउ I would like to introduce the head of the university family, Professor P.C. Trivedi, sir. Professor P.C. Trivedi is now the Vice Chancellor of Narain Vyas University, Jodhpur, but he has been ex-Vice Chancellor, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Dr. RML Awadh University, Faizabad, and Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, has over 4 decades of experience in teaching and research in the Department of Botany, University of Rajasthan, Jaipur. He has authored and edited more than 173 books. The 2-3 books he has written just after coming here, and these books are to his credit, which is a world record in the subject. He has published more than 360 research and review articles in journals of repute, guided
44 PhD students, and completed 21 major research projects funded by national agencies. He has visited 15 countries by invitation on academic purpose. He is fellow of 9 academies. He was awarded more than 25 prestigious awards and honors for his research contributions, including Birbal Sahani Gold Medal by Indian Botanical Society, BP Pal Gold Medal by Indian Science Congress, Kolkata, given by the Prime Minister of India, Lifetime Achievement Award, IPS Recognition Award, Scientist of the Year Award 2001, M.J. Narasimhan Award 2004, BioVet Fellowship Award 2005, etc. Presently, he is a president of Mandalian Association of India and served as president of many prestigious academies, including Indian Botanical Society, Indian Science Congress Association, Plant Science, Indian Pathology Society, Central Zone, Society for Promotion of Plant Science, etc. To honor his contribution, Indian Botanical Society instituted a medal in his name, Dr. P.C. Trivedi Medal for editorial excellence from 2019 onwards. Sir, we welcome you, sir, for your address, your presidential address in this international webinar. Please, Professor P.C. Trivedi, sir. Thank you, Professor Bardia. Good morning, ladies and gentlemen. We are here today for an international webinar, which is very relevant to be discussed from the point of view of our economy coping with the COVID-19 pandemic, challenges before the administration and civil society, organized by the Department of Public Administration, Vyas University, Jodhpur, and International Political Science Association, RC18, Committee on Asian and Pacific Studies, Montreal, Canada. At the outset, I would like to extend a special welcome to our chief guest and a multifaceted personality, Professor Angelina Chang, Cleveland Marshall College of Law, Cleveland State University, USA, Chairperson, RC18, International Political Science Association. Also, I would like to warmly welcome our keynote speakers, Professor Sanjay Lodha, former Head Department of Political Science, Mohanlal Sukhadia, University Udaipur, and my close friend, Professor Ashok Sharma, former Head Department of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, Head of the Department, Dr. G.S. Shekhawat. Friends, as Professor Sanjay Lodha has chronologically given the details about the COVID pandemic, that the first positive case of COVID-19 was detected on January 27, 2020. And later on, the nationwide lockdown was announced in India on March 24th, 2020. Over the next many weeks and months, the country saw a rapid increase in COVID-19 cases, public fear leading to suicides and community aggression, resistance to testing, and a bulk of myths and misinformation adding to the existing chaos and uncertainty. Business came to an halt and people were forced inside their homes with limited to nil opportunities to celebratory interactions or different types of events. We learned to appreciate and be immensely thankful for the service healthcare workers provide to us while risking their own health and family lives. The faceless administration worked each day of the lockdown and after to ensure things moved and plans executed.
Friends, behind all efforts of healthcare, public advisories and guidelines, communication and initiative for COVID containment, hundreds of government officers and administrators have been at work day and night each day, learning from research, listening to experts, and then devising a plan to manage the corona. COVID-19 resulted in an unprecedented challenge on fronts of healthcare, social development, and economy. Plans had to be revised and modified frequently, and decisions documented in the best possible manner so that months from now, each decision is backed by contextual reasoning and evidence. It is important to keep in mind that none of the usual working of the governments could be put on hold during any of this. As a consequence, the entire hierarchy from the district administration to the state leadership stressed hours to be available on calls, emails, 24 hours of each day, including Sundays. While masks have been mandatory in offices, visits from citizens for urgent and necessary services and grievance redressal could not be put on hold. Visits to understand and manage community resistance to containment and testing due to misinformation were crucial and need of the hour. The scope of improvement in governance and service delivery is no secret. Both the two speakers, they have put all the matters in very truthful manner, that how our leaders and administrators were doing their job not in a proper way. There is a consensus among experts that India's response to COVID-19 pandemic has been successful for the first wave. India acted early and acted decisively. This is not an opinion, but an evidence-based conclusion. But then came the sudden spike in cases during the second wave, which got the second devastating wave that brought the nation's healthcare system to its knees. There is no hospital beds, no oxygen, no medicine, and then there are the variants developed in the corona, which are all responsible for mishandling of total healthcare system in our country. Civil society's role is very relevant in the management of pandemic. It has been seen that countries where people have been more disciplined in following the government's regulations and guidelines have fared better and has lesser number of cases. Civil society needs to be more vigilant and proactive and should adhere to all guidelines and support the administration so that they can do their duties well. The NGOs also have had a major role in India in handling the pandemic, especially during the second wave when there was an acute shortage of oxygen and other supplies. The NGOs managed it with a lot of funding from the civil society at a large. Friends, with COVID-19, a fast-moving and global health crisis has collided, and many slower and more entrenched political, social, and economic crises around the world. Those multiple underlying fractures which have made us more vulnerable to this virus and create entry point for its harms results from gaps in human rights protection. In order to navigate this pandemic in security, we need more empowerment and more participation by civil society. We need to build up human rights-based system to protect and cherish the people who are the greatest resource of any country and the only bottom line that really counts. We need to devise policies that are grounded in right, democracy, and rule of law so that we can minimize the devastating social,
economic and humanitarian consequences of COVID-19 and build back societies that are resilient and fair. I would like to once again thank you all revered academicians, researchers and students who are present today for this webinar. I hope that these talks inspire ideas and discussions around the ways that we handle the COVID waves in a much better manner. मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह हमारे देश की स्थिति का खाका खींचा। उन्होंने बताया कि हमारे सरकारों ने इतने सालों से जो किसी भी डेवलप्ड नेशन के लिए आवश्यक होती है, दो चीजें, मेडिकल एंड एजुकेशन, उस पर ध्यान नहीं दिया। और जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, मेडिकल का 3% होना चाहिए, लेकिन आप समझते हो कि 1 या 2% भी इस पर खर्च नहीं हो रहा है। ये वास्तव में इस देश को सुपर पावर बनने से तो क्या, कई छोटे मोटे देशों से भी पीछे धकेल कर रख देगा। और इस पेंडेमिक ने हम सबको बता दिया कि किस तरह से हमारे लोगों का चारित्रिक हास हो रहा है, लोगों का जमीर मर गया है, पैसे के पीछे दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुम्हें, आंखों में वो नीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। क्या बना रखा है इस देश को? हमारे अंदर वो भावना जो हमारे पूर्वजों ने इनकलकेट की थी, सोसाइटी को सहायता करना है, हर व्यक्ति की सहायता करना है। महात्मा गांधी और उन लोगों ने अपने जान इसीलिए दे दी कि हमारा अंत का आदमी, जिसका अंत का उदय हो, उस अंत का आज पंचायती राज संस्थाएं क्या कर रही हैं। अशोक शर्मा जी ने किस तरह से ये बातें बताई कि पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए था इस देश के अंदर, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करें हर बसेरे को। क्या हम ये कर रहे हैं? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज बुद्ध पूर्णिमा है, इस पर बुद्ध का जो बहुत बड़ा उपदेश था, आपो दीपो भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। हम सब लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, दूसरे देशों से वैक्सीन मंगाने की बात कर रहे हैं, हर चीज के लिए भाग रहे हैं। हम क्यों नहीं 70 साल में इतने सुदृढ़ हो पाए कि हम खुद सब चीज कर पाए? हमारी जो वैक्सीन बनी है, आपको पता लगा होगा, जब न्यूज में अलग तरह की बातें आ रही थी और वास्तविकता क्या थी, उन बड़ी कंपनीज को पैसा विदेशों ने दिया था, तब उन्होंने रिसर्च करके बनाया है। कोई हमारी सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है इनको रिसर्च करने के लिए। आप कल्पना करो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है जो मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बताया। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश के अंदर कई ऐसे साथियों द्वारा खत्म किया जा रहा है। बड़ा दुख की बात है ये। किस तरह का साइंटिफिक टेम्पर विकसित होना चाहिए? विज्ञान का युग है और आप उनका पंडितों की बातें कर रहे हो इस देश में। हम शिक्षित लोग इस तरह की बातों का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकारें उनके विरोध में नहीं काम कर रही है। क्या, किस देश के अंदर हम जी रहे हैं? आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिकों की बात होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजिस्ट से क्यों नहीं पूछा गया? वायरोलॉजिस्ट से क्यों नहीं पूछा गया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट से क्यों नहीं पूछा गया? मैं क्वेश्चन करता हूँ एज ए वैज्ञानिक। बहुत स्थितियां खराब है, राइट प्लेस पर रॉन्ग आदमी बैठाया हुआ हमारे देश में। वक्त का अजब फैसला भी देखा, हम हंसते हंसते भी रो दिए। जिनको नहीं थी खुशबुओं की पहचान, उनके घर फूलों की पालकी आ गई। जो हमारा नेतृत्व करेंगे और वो देश को डुबोएंगे, तो कैसा नेतृत्व, क्या काम का? अजब दस्तूर है जमाने का, जमाने वालों, मजबूर को और भी मजबूर किया जाता है, और जिनको आता नहीं गुलशन का हकीकी आदाब, उनके हाथों में चमन सौंप दिया जाता है। किस तरह से इस देश के लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, संख्या गलत बताई जा रही है। 30 लाख कितने लोग मर गए और प्रतिदिन मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। और हमारे पास में अखबार वाले बता रहे हैं, संवाददाता जाकर के बता रहे हैं कि सत्यता ये है, फिर भी सरकार छुपा रही है। आप क्या बताना चाहते हो कि हमारे यहाँ लोग कम मरे? हर व्यक्ति के घर से एक एक आदमी मरा है, हमारे परिवार से, हमारे मित्रों से, आसपास। ऐसे समाज के अंदर हमको मतलब इस देश के नागरिक होने पर हमको ऐसा अजीब तरह का फील हो रहा है कि हम छटपटा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारों को जो काम करना चाहिए था समय पर,
उन्होंने वो काम समय पर नहीं किया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल को सबको काम करना पड़ेगा, आपो दीपो वो, कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। आपको दरिया बनना पड़ेगा, आपको वैज्ञानिकों को दरिया बन के आगे आना पड़ेगा, वैज्ञानिकों की सहायता लेनी पड़ेगी समाज को, तब ये देश सुधरेगा। विश्व के अंदर हमारे कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, वो विश्व में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे विभिन्न योजनाओं में विश्व के अंदर हमारे यहाँ के वैज्ञानिक गए हैं, आपने उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से। उनको रोकने के लिए आपने कौन सी ऐसी संस्थाएं बनाई कि वो वैज्ञानिक यहाँ आकर के रुके हैं, काम करें और हमारे देश के लिए काम करें? वो आना चाहते हैं, लेकिन आपने उनके लिए कहीं ऐसे रोड़े पैदा कर रखे हैं। आप किस तरह के लोगों का अपॉइंटमेंट्स करते हो, रॉन्ग आदमी, मैंने जैसा भी आपको बताया, राइट प्लस पर जब जब रॉन्ग आदमी बैठेगा संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। मैं कहना चाहता हूँ, तो भी हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। माना कि गुल को गुलशन न कर सकेंगे हम, पर कर जाएंगे कुछ कांटे कम, जिस राह से भी गुजरेंगे हम। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के कुछ न कुछ अपने आसपास के लोगों का सहायता करें। इसीलिए मुझे तो याद आती है रामायण की बात। तुलसीदास जी ने पेंडेमिक के लिए भी कितनी अच्छी बात कही थी, कि उन्होंने कहा था कि तुलसी साथी विपत्ति में, विद्या विनय विनेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम नाम एक। ये बात देखो हमको कितनी एक अच्छी बात देती है कि विद्या, ज्ञान का उपयोग यदि आपने नहीं किया है ऐसी विपत्ति में तो बेकार है। आपने विवेक नहीं किया, विवेकहीन जो भी व्यक्ति रहे नुकसान में रहे, मर गए वो लोग, क्योंकि उन्होंने विवेक से बुखार आते ही आप अपने को दवाई शुरू करनी चाहिए। कई लोग सोचते थे ढोंगी बाबा के झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में आकर के अपनी जान गंवा दी। साहस होना चाहिए था लोगों को इस तरह की चीज फेस करने का, सुकृति सत्यव्रत, और ईश्वर का नाम तो है ही। ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जवाबदेही जिसकी भी है उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि भविष्य में वो काम ऐसा कृत्य नहीं करें। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा अभी बताया गया कि आईएएस सब चीजों के लिए सर्वे सर्वा होता है, वो डॉक्टर का भी रोल वही करेगा और हर चीज का वही करे। नो, विशेषज्ञों की उपयोगिता का इस समय आप सरकार को भान होना चाहिए, विशेषज्ञों का लाभ लेना चाहिए हर स्थिति में, तभी इस तरह की चीजें संभल सकती हैं। मैं आप हम सब लोग एसएमएस करते हैं, तो एसएमएस आप हमेशा ध्यान रखिए इस पेंडेमिक समय में, एस फॉर सैनिटाइजर, इनका उपयोग करना है। एस सैनिटाइजर, एम मास्क, और फिर एस सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें। और जिस तरह से अलग अलग समय पर सरकार आपको जानकारियां देती रहती है, हमारी राज्य सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, लेकिन फंड की कमी जैसा बताया गया। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस समय विश्व के अंदर वो ही देश लीड कर रहा है जहाँ के लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय 50 साल पहले आईआईटीज, आईआईएम्स, विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों के बड़े बड़े जो उन्होंने संस्थाएं बनाई, और वो उनको क्या कहते थे, मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उनकी वजह से आज हम जो भी कुछ हैं, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने कार्य किया वहाँ के वैज्ञानिकों ने, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक आत्महत्याएं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलती, रॉन्ग आदमी को उनके ऊपर बैठा दिया जाता है। आज हाई क्वालिटी रिसर्च की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे दोनों वक्ता अपने दिल की खुल करके बात कही। वास्तव में मैं ऐसे ही वेबिनार चाहता हूँ जिसमें कि वस्तुस्थिति सामने आए, शोबाजी नहीं हो, ऊपर ऊपर की बात कही जाए। व्हाट इज द राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वेयर गवर्नमेंट फेल्ड, वी हैव टू शो टू द गवर्नमेंट दैट वी आर एकेडमिशियन। हम एकेडमिशियन है, हमारा दायित्व है। यदि हम अपना दायित्व नहीं करेंगे पूरा, और हम इधर उधर की चीजों में उनकी खुशामदें करेंगे, ये बेकार हो जाएगा। अंत में मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर मीना बर्डिया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, and Dr. Charu, who is from the Department of Economics, Narsi Mohanji Institute of Management Studies, Mumbai, and head Shekhawat sir for doing excellent job and bringing the jewels of this seminar, the two important speakers, and Madam
President Angelina Chen. She has spared her valuable time to be associated with our webinar. मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ. And I'm sure that we would like to be able, all the participants will take benefit, all the research scholars, teachers, and who are associated with the webinar on behalf of on behalf of University, Jayana and Vyas University. I am thankful to you all for joining this webinar and participating and playing very important role. You should also send your feedbacks about this webinar. और मैं पुनः हमारे दोनों प्रमुख वक्ताओं को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी बातें खुले मन से इस मंच पर कही. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत ही सुंदर ढंग से बड़े जोशीले शब्दों में सर ने जो बातें कही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा. और सर ने जिस तरह से एक नागरिक के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं उसकी पालना किस तरह से हमको करनी चाहिए, समाज में किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, उस पर आपने विस्तार से बात की. सर ने बहुत खूबसूरत बात की कि विश्वविद्यालय की यही खूबसूरती है. जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, हमारे खासकर की नोट स्पीकर्स ने, सर ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए ये बात कही है. मुझे लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है और मैंने सर के फेसबुक से ही ये पंक्तियां उठाई है कि गलत लोगों की जीत उस वक्त तय हो जाती है, गलत लोगों की जीत उस वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं. तो सर ने उसी बात को रेखांकित किया. सर आपका बहुत बहुत आभार. क्योंकि इस कार्यक्रम के इस पूरे वेबिनार का कोऑर्डिनेटर का दायित्व मुझे दिया गया है, तो इसलिए मैम का यह आदेश है कि मैं सभी अतिथियों का और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो साथी जुड़े हैं उन सभी का औपचारिक आभार भी मुझे ही व्यक्त करने की जिम्मेदारी दी है. तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे दिनेश जी. बस एक सेकेंड, प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी ने अपना ईमेल आईडी दिया है, तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस है तो मैं उनका ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ चैट पे. बिल्कुल तो बिल्कुल चैट कर दीजिए आप, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर रही हूँ भी चैट पे. बिल्कुल. सभी साथियों, आप लोगों को प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी का ईमेल मिल रहा है, ईमेल आईडी. तो आप अगर किसी प्रकार का संपर्क करना चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे और इनपुट ले सकते हैं. मैं आभारी हूं हमारे इस वेबिनार की मुख्य अतिथि प्रोफेसर एंजेलिन चैंग का कि उन्होंने पूरी भौगोलिक दूरियों को दूर छोड़ते हुए हमारे इस डिजिटल मंच से जुड़े और बहुत सारे ऐसे इनपुट्स दिए हैं जिनसे पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ हमारे सारे जो श्रोता जुड़े हैं, जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उन सब के साथ साथ यूट्यूब से जो साथी जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत फायदा मिलेगा. तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ हमारे दोनों मुख्य वक्ता, जिस तरह से प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी ने और प्रोफेसर अशोक शर्मा जी ने देश की जो वस्तु स्थिति की जानकारी को एकदम खुलकर जो बयां किया है, वो वाकई में बतलाता है कि एकेडमिक डिस्कोर्स, खासकर जब विश्वविद्यालय में कोई बात शिक्षक जब रखता है तो उसके क्या मायने होते हैं. जिस तरह से देश में पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी सेफर्स असफल हुए हैं और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिस तरह से प्रश्न लगाए गए हैं, साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते सिविल सोसाइटी की, प्रशासन की जो भूमिका को आपने रेखांकित किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत शब्दों में जो आपने रेखांकित किया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार. हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी साहब हमेशा बहुत सक्रिय रहने वाले लोगों में से हैं और ये जो वेबिनार का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अभिप्रेरित किया है आपने. पिछले 14-15 महीने में आपके कार्यकाल में लगभग 100 से ज्यादा जो वेबिनार हुए हैं वो उस वजह से हुए हैं क्योंकि आपका हमेशा हमको मोटिवेशन मिलता रहा है. प्रोफेसर जी.एस. शेखावत साहब, मैंने कहा 2 महीने बाद आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार एकेडमिक एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहते हैं. और जैसे ही हमने कहा कि सर समय बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप अपना उद्बोधन को संक्षिप्त कर दीजिए, तो सुंदरता देखिए आपकी, जो खूबसूरत जो योगदान है वो देखिएगा कि आपने 2 मिनट में ही उसको कंप्लीट कर लिया. सर मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. सतीश जी वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जिनकी वजह से हम लोग आप लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं. पूरी तकनीकी जो पक्ष है उनको सतीश जी देख रहे थे. हम सतीश जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. डिजिटल मंच इस
तरह से जो लोग जुड़े हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने पिछले लगभग 2.25 घंटे से उस पूरे जो एकेडमिक जो डिस्कशन था उसको बड़ा ध्यान से सुना। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्यों को लेकर हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है वो उद्देश्य काफी हद तक सफल रहा होगा और आप लोगों को निसंदेह रूप से हमारे जो कीनोट स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से कई सारे ऐसे इनपुट्स मिले होंगे जो आपकी रिसर्च में आगे कई सारे नए डायमेंशन, नए आयामों को खोलने वाले हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया का। पिछले 3 दिन से समाचार पत्रों में लगातार आपने हमारी खबर को, हमारे इस वेबिनार की तैयारियों को तवज्जो दी, उसको स्थान दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहेंगे। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं अंत में आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान से खड़े हो जाइए ताकि हम राष्ट्रगान का गायन करें और इसके बाद में इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करें। तो मैं टेक्निकल टीम से सतीश जी से निवेदन करूंगा कि वह राष्ट्रगान को प्रारंभ करें। सतीश जी। सतीश जी, कोई बात नहीं, हम खुद भी गा सकते हैं राष्ट्रगान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा शुभ नाम। सतीश जी, हाँ कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए सतीश जी। तव शुभ नामे जागे नहीं सतीश जी गाने का कह रहे आशीष मांगी, गाए तब जया गाता, जन जन गण गण मंगल दायक जय हे भारत भारत भाग्य भाग्य विधाता, विधाता, जय जय हे हे जय जय हे हे जय जय हे हे जय 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 हे। जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Once again, a reminder to please fill your feedback before 5 p.m. today. आप सभी अपना feedback भर लीजिए। लिंक उसकी चैट में शेयर की हुई है। Dr. Angeline Chang, thank you once again. Oh. You were there throughout the program, and I mean, I don't know. It must be what 3:30 in the night. Yes, it's 3:30. I am quite tired, but I I really enjoyed. I think you should probably log out now. Good night. Yes, I'm going to log out now. You'll need a good sleep now. Wonderful. It was wonderful. Thank Congratulations. you, Professor Angeline. Thank you so much. Great to see you. Great to see Okay, you. Take we'll have a care. talk. You go and sleep now. Absolutely. All right. Thank you. Bye bye. Thank you.